So today I am going to discuss about an important topic of electrochemistry chapter. Topic is electrochemical cell. So what is the electrochemical cell? Before discussing about it, let us discuss first about the electrolytic cells. So electrolytic cells are the setup in which electrolysis process is carried out. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जहां इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को इन्वॉल्व किया जाता है. जैसे कि वाटर डिकम्पोजेस टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाउ वाटर इज डिकम्पोजेस टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू द वाटर. When electricity is passing through the water, water decomposes to hydrogen and oxygen gas. So it is a redox reaction. Why it is a redox reaction? Because during this reaction, oxidation number of hydrogen increases and oxidation number of oxygen decreases. So this is a redox reaction because in this reaction, oxidation and reductions taking place simultaneously. So electrolytic cell is a setup in which a non-spontaneous redox reaction is involving with the help of electricity. So this experimental setup में particular एक substance का बीच से electricity pass करके एक non-spontaneous redox reaction को involve किया जाता है. That experimental setup is called electrolytic cell. So in an electrolytic cell, a non-spontaneous redox reaction is involving with the help of electrical energy. Is involving with the help of electrical energy or electricity. मतलब electricity pass करके एक non-spontaneous redox reaction जिस setup में involve किया जाता है, that setup is called electrolytic cell. तो electrolytic cell is related to non-spontaneous redox reaction. Remember it. So in a electrolytic cell, एक non-spontaneous redox reaction को involve किया जाता है by passing electricity with the help of electrical energy. So very simply, what is then electrolytic cell? So electrolytic cell is a setup in which electrical energy is converted into chemical energy. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेटअप है जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व किया जाता है. सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. दिस कंटेनर इज कंटेनिंग वाटर. In this container water is present. Through this water, in water, two electrodes are immersed. This is one electrode, this is another electrode. So both electrodes are connected to the battery. This electrode becomes positive electrode. Positive electrode is called anode. Why this electrode becomes positive? क्योंकि ये electrode को battery का positive end का साथ connect किया. और this is negative electrode. Negative electrode is called cathode. So why this electrode becomes negative? क्योंकि बैटरी का नेगेटिव एंड का साथ कनेक्ट किया. सो दिस इज द बैटरी. बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो जब एनोड एंड कैथोड कनेक्टेड टू द बैटरी, देन थ्रू द वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा. when electricity is passing through the water, then at the anode oxidation reaction takes place, at the cathode reduction reaction takes place. That means when electricity is passing through the water, a non-spontaneous redox reaction is involving, or due to that non-spontaneous redox reaction, at anode oxygen gas is liberated and at the cathode hydrogen gas is liberated. So what are the electrode reactions? At anode oxidation takes place always. In an electrolytic cell, at anode always oxidation reaction takes place. How oxidation takes place? According to our previous concept, oxidation takes place by the loss of electron. During oxidation number increases. So water oxide ions
and hydrogen ions are present. When electricity passes through the water, then water decomposes to oxide ion and hydrogen ion. ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्साइड आयन एनोड का पास जाएगा. सो नेगेटिवली चार्ज ऑक्साइड आयन एनोड का पास जाके इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा लाइक दिस. ऑक्साइड आयन एनोड का पास गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पास गया, क्योंकि ऑक्साइड आयन इज नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पास गया, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पास जाके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया. कितना मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया? 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्साइड आयन converted to oxygen by the loss of how many moles of electron? 4 moles of electron. So this is the redox reaction. At cathode, this is an oxidation reaction which is involving at the anode. Similarly, at the cathode, reduction reaction takes place. So cathode is negative electron. Cathode is the negative electron. So cathode का पास positive ion hydrogen ion जाएगा. So positive hydrogen ion कैथोड का पास जाके, कैथोड इज द रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन. ड्यूरिंग द रिडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन होता है. सो कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया ड्यूरिंग द रिडक्शन? 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन किया. देन हाइड्रोजन आयन क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस बन गया. सो एट कैथोड ड्यूरिंग द रिडक्शन रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, और ड्यूरिंग द oxidation reaction at anode oxygen gas is liberated. So anode में कितना मोल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 4 मोल. देन कैथोड रिएक्शन में भी 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. देन दिस रिएक्शन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2. सो एनोड एंड कैथोड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग प्लस कर देने से वी हैव द ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन. So this is the overall redox reaction. लेफ्ट साइड में दिस इज ऑक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन. 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन हो गया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया हम लोग कैथोड रिएक्शन को. देन प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस. वी नो दैट ऑक्साइड आयन कंबाइन विद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसेस वाटर इन लिक्विड फॉर्म. जब वाटर का बीच से इलेक्ट्रिसिटी पास किया, मतलब जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया, देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ. ऑक्सीजन गैस कहाँ लिबरेट हुआ? ऑक्सीजन गैस कहाँ लिबरेट हुआ? एनोड में. और हाइड्रोजन गैस कहाँ लिबरेट हुआ? कैथोड में. सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप in which water is electrolyzed, in which electricity is passing through the water. So this is an example of electrolytic cell. So there are different laws related to the electrolysis, but that laws are deleted from your syllabus. Now we are going to discuss about the electrochemical cell. So electrochemical cell, it is also a setup in which chemical energy released by a spontaneous redox reaction is converted into electrical energy or electricity. So electrochemical cells just opposite to the electrolytic cells. In an electrolytic cell, electrical energy is converted into chemical energy, but in an electrochemical cell, chemical energy is converted into electrical energy. Another difference between electrolytic and electrochemical cell, electrolytic cell is related to non-spontaneous redox reaction, but electrochemical cell is related to spontaneous redox reaction. So किसी भी electrochemical cell में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जितना केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो वेरी सिंपली, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So various type of batteries are example of electrochemical cells. Batteries are the source of electricity. Batteries we can use in automobile, inverters.
batteries are the example of electrochemical cell, because in battery chemical energy is converted into electrical energy. So electrochemical cells are the source of electricity, remember it. Why electrochemical cells are the source of electricity? Because electrochemical cells provide us electricity. How they provide electricity? By converting chemical energy into electrical energy. So in an electrochemical cell, chemical energy produced by a spontaneous redox reaction is converted into electrical energy. Electrochemical cells are also known as galvanic cells. Why electrochemical cells are also known as galvanic cells? Because in an electrochemical cell, Gibbs energy produced by a spontaneous redox reaction is converted into electrical energy or electricity. So regarding Gibbs energy, we have discussed in thermodynamics chapter in class 11. So in an electrochemical cell, Gibbs energy produced by a spontaneous redox reaction is converted into electrical energy. So electrochemical cells are also known as galvanic cells. So electrochemical cells are also known as voltaic cell, because electrochemical cells are first prepared by Volta. Therefore electrochemical cells are also known as voltaic cell. So now let us discuss an example of electrochemical cell. Daniell cell is an example of electrochemical cell. So Daniell cell is an example of electrochemical cell. So in Daniell cell there are two containers. One is zinc container. One container is containing zinc sulfate, aqueous solution of zinc sulfate. Another container is containing aqueous solution of copper sulfate. In copper sulfate solution, copper rod is suspended. Copper rod is suspended in the copper sulfate solution, and zinc rod is suspended in the zinc sulfate solution. So zinc rod immersed in the zinc sulfate solution, copper rod is immersed in the copper sulfate solution. So here zinc rod and copper rod connected through an external wire. To complete the electronic circuit, another U-type tube is suspended in the both solutions. This U-type tube is known as salt bridge. Salt bridge is containing a particular type of salt, और ये salt bridge का दोनों end कॉपर प्लाग लगा के बंद करके रखा हुआ है, नहीं तो salt bridge में जो salt है solution में निकल जाएगा. So this is called salt bridge. तो salt bridge, first function of the salt bridge, it completes the electronic circuit. ये जब salt bridge डाला, salt bridge क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंप्लीट कर दिया. जब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्लीट हो गया, देन एट एनोड, हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट साइड में एनोड होता है, राइट साइड में क्या होता है, कैथोड. सो लेफ्ट साइड में जो एनोड है, एनोड इज मेड अप बाय जिंक. एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा, ऑलवेज एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप का एजेंट होता है, वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अनदर वन इज रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और कैथोड में एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस. कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा, ऑलवेज रिडक्शन होगा. सो कैथोड मेड अप बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही रिडक्शन होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन होता है. सो एनोड इज मेड अप बाय रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैथोड इज मेड अप बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
So at cathode reduction reaction takes place, at anode oxidation reaction takes place. So anode में जो oxidation reaction होगा that is called oxidation half cell reaction, and cathode में जो reduction reaction होगा that is called reduction half cell reaction. Anode and cathode दोनों half cell reaction को हम लोग प्लस कर देने से we have the overall redox reaction. So जब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, when electronic circuit is completed by the Sol bridge, then at anode oxidation takes place and at the cathode reduction reaction takes place. So anode is, at anode how oxidation takes place? At anode is the zinc rod. So in the zinc rod, zinc atom in which state? Solid state. तो zinc rod में जो zinc atom है, they moves to the solution as a zinc ion by the loss of how many moles of electron? 2 moles of electron. So electron loss हो रहा है. So this is the oxidation reaction. This is oxidation. Why? क्योंकि zinc का oxidation number बढ़ रहा है. So zinc 0 से कितना हो गया? +2. Oxidation number increases. Oxidation number increase होने से that is the oxidation reaction. तो zinc का oxidation number कैसे increase हो रहा है? By the loss of how many moles of electron? 2 moles of electron. So जब 1 mole zinc atom rod से solution में move करेगा, solution में already zinc ion है क्योंकि this is the zinc sulfate solution. जब 1 mole zinc atom solution में move करेगा as a zinc ion, then कितना mole electron produce होगा? 2 moles electron. That means 2 moles electron zinc rod को दे के zinc atom कहाँ में आ जाएगा? solution में आ जाएगा as a zinc ion. zinc atom rod को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्रोवाइड करेगा, खुद जिंक आयन बन के कहाँ आ जाएगा? सॉल्यूशन में. जिंक आयन बन के सॉल्यूशन में आ जाएगा. सो रॉड को इलेक्ट्रॉन मिलेगा. रॉड को कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा? जिंक एटम से. सो दिस रॉड बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच, सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. सो रिमेंबर इट, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज क्योंकि एनोड को इलेक्ट्रॉन मिलेगा. But in electrolytic cell, anode is positively charged. Remember it. In an electrochemical cell, anode is negatively charged, but in electrolytic cell, anode is positively charged. So anode को जब 1 mole zinc atom solution में आ गया as a zinc ion, anode को कितना मोल, anode में कितना मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ? 2 mole electron. So then that 2 mole electrons moves towards the cathode. कैथोड का पास जाएगा 2 moles इलेक्ट्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल वायर. क्या करेगा? 2 moles इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड. सो ये 2 moles इलेक्ट्रॉन अभी कैथोड में जाके क्या करेगा? सो एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस. कैथोड में क्या रिएक्शन होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा. कैसे रिएक्शन होगा? क्योंकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर आयन प्रेजेंट है. कॉपर आयन कैथोड का पास जाएगा. सो कॉपर आयन विच इज पॉजिटिवली चार्ज आयन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन कैथोड का पास जाके 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एंड रिड्यूस टू कॉपर एटम. सो 2 moles इलेक्ट्रॉन एनोड से जा रहा है. ये 2 moles इलेक्ट्रॉन को क्या किया? कॉपर आयन गेन कर लिया. कॉपर आयन गेन करके क्या बन गया? कॉपर एटम बन गया. So around the copper rod here, copper atoms are deposited. So अभी ये जो सेल में जब रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होगा तो क्या फिजिकल चेंजेस दिखाई देगा? फिजिकली हम लोग को क्या दिखाई देगा? ये रॉड धीरे धीरे छोटा होते जाएगा. क्यों ये रॉड धीरे धीरे छोटा होगा? क्योंकि एनोड दैट मीन्स जिंक रॉड डिजल्व्स इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. जिंक रॉड से मटेरियल कहाँ जाएगा? जिंक रॉड से मटेरियल सॉल्यूशन में जाएगा. जिंक रॉड से जिंक एटम सॉल्यूशन में जाएगा. जिंक रॉड से जिंक एटम सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा. दैट मीन्स जिंक रॉड डिजल्व्स इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. एंड यहाँ क्या होगा? क्योंकि कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू. जब कॉपर आयन जाके
कैथोड में न्यूट्रलाइज होगा टू कॉपर एटॉम, देन सॉल्यूशन में कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन घटेगा, नंबर ऑफ कॉपर आयन कमती होगा इन द सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कॉपर आयन कमती होगा, देन सॉल्यूशन का ब्लू कलर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। और आफ्टर डेफिनिट टाइम ये सॉल्यूशन का ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, सॉल्यूशन बिकम्स क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और जब सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, देन हम लोग क्या करना पड़ेगा, न्यू सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और ये भी यहाँ भी एनोड में भी जब जिंक रॉड कंप्लीटली डिजल्व हो जाएगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, हम लोग अनदर जिंक रॉड यूज करना पड़ेगा। सो इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। जब एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, देन करेंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, कैथोड टू एनोड करेंट फ्लो होगा। सो इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करेंट फ्लो होता है फ्रॉम कैथोड टू द एनोड। सो इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, anode is made up by reducing agent and cathode is made up by oxidizing agent. In an electrochemical cell, at anode reducing agent loses electrons. In a cathode, oxidizing agent gain electrons. So in an electrochemical cell, electron convert होता है from anode to cathode, क्योंकि anode में रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कैथोड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो दिस इज डेनियल सेल। डेनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन हियर, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, ओवरऑल स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग को कैसे मिलेगा, ओवरऑल रिएक्शन कैसे मिलेगा, ओवरऑल रिएक्शन मिलने के लिए हम लोग एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन दोनों को प्लस करने से ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगा। देन जिंक प्लस कॉपर आयन, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, कैंसिल मतलब ऑक्सीडेशन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन में 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। सो दिस इज द ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज द ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन which is involving in this electrochemical cell. This is Daniell cell. So Daniell cell is an example of electrochemical cell. So in next video we will discuss how to calculate the cell EMF or cell potential for an electrochemical cell. Thank you.